So am I audible to all? Hello, Jitendradeep ma'am. Meenakshi this side. Hello ma'am. Jitendradeep ma'am हो ना आप? No ma'am. कौन है बेटे? Ma'am Tina. टीना. ये बेटे this account is with me at 2:40. ये कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? So ma'am, today is Wednesday and I have class at 2:40. Okay, अच्छा today is Wednesday. एक मिनट मैं अपना ना टाइम टेबल क्रॉस चेक कर लेती हूँ. Ma'am, it's SOM4. हाँ मुझे पता है SOM4 है. एक मिनट I will check my class schedule just to check the cross. Okay, Tina, you go ahead. I think there is some change in my timetable. Okay. Okay, thank you. So in the last lecture, what we have discussed that some examples of Newton's method, and then we have discussed the order of convergence. So in this lecture, is there any doubt in the previous lecture? Yes or no? No, ma'am. No. So if there is no doubt, we are moving forward. नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस. ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस किसका चेक कर रहे हैं हम? न्यूटन्स मेथड का. वी हैव चेक द न्यू ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बाइसेक्शन मेथड. जब हमने किया था उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस मेरा कितना आया था? 1. दैट इज माय लीनियर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस. ठीक है. फिक्स्ड पॉइंट हमने मेथड किया, फिक्स्ड पॉइंट मेथड, उसमें ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितना था? 1. बट अगर आपका डेरिवेटिव g dash alpha, g double dash alpha, g q minus 1 times differentiable alpha comes out to be your 0, and your g qth derivative is not 0, then you say you have order of convergence as at least q. Fine. तो यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या थी कि मेरा g डैश अल्फा ही नॉन जीरो था. अगर मेरा g डैश अल्फा नॉन जीरो है तब मेरा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितना है? 1. बट अगर मेरा q माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएबल है और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितना है तो मेरा क्या होगा? q माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव अल्फा g मेरा जो है डिफरेंशिएबल है और 0 है और वो क्या है? तो मेरा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ रहा था? q, क्योंकि मेरा g q alpha is non-zero है. So in the second method we have not proved the order of convergence, but I have told you it was 1.618. Due its proof is lengthy, so we have skipped that and it will not come in your syllabus. It will not come in your exam. We have done also for regular falsi method. We have done it for the order of convergence is 1. So here we are saying the order of convergence for your Newton's method. So order of convergence in this you are saying at least 2. That means at least quadratic. So we are writing the proof of the theorem. So the statement of the theorem is let f be a continuous function. Let f be a continuous function on the closed interval a b, and if alpha is a simple root of f of x, and f dash alpha is not equal to 0, then Newton's method
generates a sequence xn converging to the root, or converging at least quadratically to root alpha for any initial approximation near to x naught near to alpha. So this is a definition, this is a statement for the convergence of Newton-Raphson method. So what it is saying, that I have a continuous function on the interval a b. Here it has specified that alpha is my simple root. Who will tell me what is the simple root? Yes, what do you mean by simple root? Aditya. Yes, what do you mean by simple root, Aditya? Nandish. A root having multiplicity A root having multiplicity 1. Yes. If I have a function, like I have a function f of x something, if I can factorize the function like x minus a, x minus b, and if the multiplicity of the root if the root has multiplicity 1, then we say it is a simple root. इसका मतलब क्या है कि जो आपका रूट है वो फंक्शन में अगर हम उसको फैक्टर करेंगे जो सिर्फ एक ही बारी आ रहा है, जैसे x माइनस 2 और x माइनस 3, यहाँ पे 2 और मेरे 3 और क्या है सिंपल रूट. बट इफ आई राइट x माइनस 2 क्यूब x माइनस 4, तो यहाँ पे 4 तो मेरा सिंपल रूट है बट 2 मेरा क्या है मल्टीपल रूट. सो इट इज स्पेसिफाइंग दैट. So you can define that. We have done example for x raised to the power 100 also. So here the x equal to 0 is a multiple root. Fine. So it is specific that why the convergence was slow there. So it is saying that if your alpha is simple root, fine, and at the root your derivative term is not 0, that the function is not 0, then your Newton's method, the sequence it will generate. But is the sequence xn plus 1 is equal to xn minus f of xn divided by f dash xn. It will converge at least quadratically. का मतलब क्या है कि कम से कम उसकी convergence 2 होगी. का मतलब इसीलिए वो जल्दी से converge करा. That we have seen in the example cos x minus xex, and it will converge to the root alpha for near approximation x naught. So we will do this proof in the way we have done it for your fixed point. So we are analyzing Newton's method. We are analyzing Newton's method as fixed point iterations method. As fixed point iteration method. How we are proceeding, that I will tell you. Now we have in Newton's method. What is my formula for the Newton's method? Raghav. Ma'am, xn minus Xn minus. fn fxn Yes. divided by derivative of xn. Yes. So this is the formula for our Newton's method. What we are saying. So here we are saying that we are regarding Newton method as your
fixed point iteration method. But it means in the fixed point iteration method, what we have done, we have taken x is equal to g of x. That means we reformulate the function f of x. हम f of x को इस तरह ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कि वो किसकी फॉर्म में आ जाए, x इक्वल टू gx की फॉर्म में आ जाए. तो अगर मैं कहूँ कि ये मेरी आइट्रेशंस हैं, अगर मैं इसी को अपना gxn कहूँ, so since we are analyzing our Newton method as fixed point iteration method, तो मेरा ये अगर gxn है तो इसका मतलब क्या हुआ, here I have here gx is equal to x minus f of x upon f dash x. तो अब आपने कन्वर्जन शो करना है कि ये जो आपकी सीक्वेंस है, the sequence which you are getting this, it will converge to fixed point. फाइन. फिक्स्ड पॉइंट शो करने के लिए आपने क्या किया था कि मेरे पास एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम क्या कहती है कि अगर मेरा x a b को बिलोंग कर रहा है तो मेरा क्या आना चाहिए, मेरा gx भी a b को अगर बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली आई विल हैव एटलीस्ट वन फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ क्या शो करेंगे कि हम कोई ऐसा x का इंटरवल लेंगे. ठीक है, हम चेक करेंगे अगर x उस इंटरवल में बिलोंग करे, क्या gx भी उस इंटरवल में बिलोंग करे. अगर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इसका मतलब आई हैव अ फिक्स्ड पॉइंट. सो दैट मींस दिस प्रॉब्लम इज माय फिक्स्ड पॉइंट प्रॉब्लम. नेक्स्ट वो क्या कहता है कि अगर आपको दिया हुआ है दैट योर g डैश x इज लेस देन इक्वल टू k एंड योर k इज लेस देन 1 for all your x belonging to your interval a b, then आप क्या करते हो, इस उसमें क्या होता है कि आपका क्या होता है, यूनिक फिक्स्ड पॉइंट होता है. ठीक है ना, यही कंडीशन थी. इसका मतलब ये हमें गिवन होता है और अगर ये कंडीशन हम सेटिस्फाई कर देते हैं तो मेरा क्या आता है, यूनिक फिक्स्ड पॉइंट. तो यही कंडीशंस हम अपने g पे लगाएंगे और चेक करेंगे क्या ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है. तो अगर सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग थ्योरम की भी दो स्टेटमेंट्स यही थी. उसके बाद हमने उसमें एरर बाउंड्स निकाले थे, बट हमने सिर्फ यहाँ पे कन्वर्जेंस शो कर रहे हैं. तो यहाँ पे मेरा ये क्या आ रहा है कि ये मेरा gx है, तो हम फिक्स पॉइंट के उस पे मूव कर रहे हैं. तो व्हाट वी विल डू हियर, वी फाइंड एन इंटरवल. हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि रूट आपकी अल्फा में लाई कर रही है, सो फॉर द easiness I am taking, suppose I have this interval, you can also take a and b, so in which your root lies. So we find an interval alpha minus delta alpha plus delta such that अगर मेरा ये इंटरवल है तो मेरा gx भी क्या करना चाहिए, इसी इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए. एंड फॉर विच क्या होना चाहिए कि अगर मुझे गिवन है फॉर विच माय g डैश x is less than equal to k and k is less than 1 for all x belonging to your alpha minus delta alpha plus delta, तब मेरा क्या होगा, यूनिक फिक्स पॉइंट होगा. हमने यही करना है ना इसी में. तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, आपको पता है पहले यहाँ पे क्या होता था, x अगर बिलोंग करे यहाँ पे gx भी आपका क्या होना चाहिए था, कॉन्टिन्यूस फंक्शन. तो वी नो दैट सिंस the function given to us, since f is also continuous function, since f is continuous function and f dash alpha we have given that it is not 0, that means what we have given, अगर आपका ये नॉन जीरो है इसका मतलब क्या है, that is a continuous function, that is the continuous function is non-zero at a point which implies it will remain non-zero in the neighborhood of
अल्फा। यही मतलब हुआ कि अगर मैं कह रही हूँ कि मेरा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, और मेरा अगर एफ डैश अल्फा जीरो है, एफ डैश अल्फा ही अगर जीरो है, इसका मतलब कोई भी अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अगर वो नॉन जीरो है एक पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली उसके अराउंड में नेबरहुड बनाऊं, ड्रॉ करूं, तभी भी वो क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा नेबरहुड ऑफ अल्फा में। तो अगर आपका ये डिफाइन है तो आपका जीएक्स किस तरीके से डिफाइन है, आपका जीएक्स इसी तरीके से डिफाइन है ना, कि मेरा जीएक्स क्या है, एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एफ डैश एक्स, यही है ना आपका जीएक्स। तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये भी मेरा नॉन जीरो रह रहा है, इसका मतलब देयरफॉर माय जीएक्स इज डिफाइंड and continues in the neighborhood of alpha. Is this point clear? Yes or no? Yes, ma'am. So also what we are doing, also in the neighborhood, if we check, also in the neighborhood, if I find the derivative of this term, what will be the derivative of g dash gx? I have a function x minus fx divided by f dash x. What will be the derivative? 1 minus then u and v by u by Yes, v u वाला upon v formula. How you will apply your u upon v formula? f dash x का whole square So f dash denominator में x फिर whole root square. पर Yes, f dash x whole square minus f dash x, that is v into derivative of u. Derivative of u is this. Next, minus में fx yes, into f double dash है. yes, the derivative of v. So you have this. Now if you will solve this, this is coming out to be 1 minus. This will become f dash x whole square minus f of x, f double dash x divided by f dash x whole square. So if you will solve this term, this is coming out to be your f of x into f double dash x into, I can write it as 1 by f dash x whole square. If you will solve this, take the LCM, it will cancel out and you will get only these terms. Then minus minus will be positive. So now we have this g dash x. We know that now, since because we are saying alpha is the root, if alpha is the root, what will be the f alpha? Yes, if alpha is the root, what will be my f alpha? 0. Repeat, what will be my f alpha? 0. 0. Because alpha is the root, at the root your function will be 0. Now since f of alpha is 0, which implies what will be your g dash alpha? If you have this g dash x term, what will be your g dash x, g dash alpha? If you will substitute alpha over here, this is f 0. alpha. 0. F0 into anything, that will be your 0. That means you have found that your g dash alpha is 0. So it is a very good thing here we have found, because when we have done the fourth remark, if you remember in fixed point, हमने क्या कहा था कि अगर मेरा g dash alpha 0 आ जाता है, g double dash alpha 0 आता है, g q minus 1 times differentiable अल्फा 0 हो जाता है, तो मेरा क्या होता है उस केस में, मेरा q आता है, q मेरी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आता है। तो यहाँ पे इफ यू सी और g डैश अल्फा इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब आपका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आएगा वो 1 तो नहीं है, इसका मतलब आपका हाइयर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आएगा, दैट वी विल सी व्हाट इट विल बी। So g dash alpha equal to your 0. Now since you have done all this, you have proved that your g is defined on your interval. Next, what is to be proved?
that your gx should also belong to your interval alpha minus delta and alpha plus delta. Now we know that since g is a continuous function, and if we take that and k is greater than 1, less than 1, then there exists a number delta such that your g dash x less than equal to k for all x belongs to your this interval alpha minus delta and alpha plus delta. Fine. Now we will show what we will show that your gx is also belonging to this interval. Now we will show that फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि gx अपने आप को ही मतलब अगर आपका x a b को बिलोंग कर रहा है तो gx भी मेरा a b को बिलोंग करे, इसका मतलब g जो मैप है वो ये मैपिंग जो है वो अपने आप के ऊपर ही है. So next we will show that g maps alpha minus delta alpha plus delta into itself, into alpha minus delta and alpha plus delta. Now if x is belonging to this interval alpha minus delta alpha plus delta, then by mean value theorem, what was mean value theorem? Yes, what was mean value theorem? Yes, Rudransh, what was mean value theorem? पढ़ी है ना कैलकुलस में? कि हम क्या कहते हैं कि अगर मेरा fx कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और x अगर मेरा इंटरवल में Yes, बिलोंग ma'am. करे F b minus f a upon f dash yes, b so minus we will have exactly there exists c belonging to your interval a b such that your f dash c comes out to be your f b minus f of a divided by b minus a. This was your mean value theorem. So since x is belonging to this interval alpha minus delta alpha plus delta, then by mean value theorem there exists a number psi belonging to which interval it will belong, alpha minus delta and alpha plus delta, such that what condition I will have over here. Now if I take gx minus alpha, now because we have taken f of x is equal to your 0 and we are taking f of alpha is my 0 and we have reformed x in gx, that means alpha is the fixed point of g. Is this step clear? Yes, Because ma'am. root finding problem are equivalent to your fixed point, finding the fixed point. So since your alpha is fixed point, so gx minus alpha, that will be my gx minus g alpha. So if I'll apply the mean value theorem over here, so what I will have this is equal to g dash, the number I am taking as psi, g dash psi, that will be equal to x minus alpha. Fine. Now this value, now I have g dash x is less than equal to k for x belonging to this. That means this is less than equal to k times, I can do like this also, because in mode the property does not change. So that will be g dash x, and g dash x is less than equal to k, and this is x minus alpha, and this is because k is already less than 1, so you are saying x minus alpha. So you have gx minus alpha is less than x minus alpha, which implies g maps alpha minus delta alpha plus delta into alpha minus delta and
alpha plus delta. Is this clear? Yes or no? Yes, ma'am. Fine. Now you have proved that your gx is less than gx is belonging to your interval this, then your x is belonging to this interval, and you have taken the condition that your g dash x is less than k. That means, so all the hypotheses of contraction mapping theorem are satisfied Therefore, the sequence which we are getting for xn is equal to gxn. The sequence xn converges to root अल्फा. ये तो हमने प्रूव कर दिया कि जो मेरी सीक्वेंस है वो डेफिनेटली क्या करेगी, दैट विल कन्वर्ज टू अल्फा. बट नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस. ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस हमने क्या निकाला था, 4th रिमार्क में हमने किया था यही कि जी डैश अल्फा अगर मेरा 0 है, जी डबल डैश अल्फा 0 है, जी क्यू माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएबल अल्फा बी 0 एंड जी क्यू अल्फा है तो नॉन 0 है, तो मेरा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या था, क्यू. तो हम यहाँ पे चेक करेंगे जी डैश अल्फा वी हैव चेक्ड दैट इक्वल टू 0. दैट मींस इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो 1 तो नहीं है. नाउ वी विल चेक फॉर जी डबल डैश एक्स. तो आई हैव फंक्शन जी एक्स. मेरा फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश डबल डैश एक्स इंटू 1 बाय एफ डैश एक्स होल स्क्वायर. फाइन, दिस वाज माय एफ ऑफ एक्स. अगर आप जी डबल डैश एक्स फाइंड करोगे, if I take this function, first I am taking the derivative of this function, it is coming out to be f dash x and the other will remain same, plus the derivative second, first and second will remain, it will be your f triple dash x and it will remain 1 by f dash x whole square, plus f of x, first function remains same, second function remains same, and you take the derivative of the third term, that will be minus 2 f dash x minus cube into its derivative f double dash x. So this will be your derivative. Now we will check at the root. Now I will check g double dash alpha. If I substitute f double dash alpha, what it will be? It will be my f dash alpha, f double dash alpha into 1 by f dash alpha square, and this will be cancelled out and this is coming out to be your, you have this f double dash alpha by f dash alpha, plus if you substitute f alpha over here, what will be this term? Yes, anyone? What will be my this term? If I am finding at alpha, what will be my this term? Yes. Anyone? What will be my this term? Nandish. रुद्रांश. आप एक बार क्वेश्चन बोलोगे दोबारा. आप कह रहे हो जी डबल डैश एक्स आपने, यू हैव फाउंड जी डबल डैश एक्स, जी डबल डैश एक्स जी एक्स ऑफ जी डैश एक्स, सॉरी आपका क्या था, ये था ना एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर, ये था आपका जी डैश एक्स. आपने डबल डेरिवेटिव निकाला. डबल डेरिवेटिव आपका क्या होगा, 3 फंक्शन है u v, this is u function, this is v function and this is w, u into v into w. Fine.
डेरिवेटिव आपने निकाल लिया, डबल डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ u v and w as it is, u and w as it is derivative of v, u and v as it is derivative of w. So if I have to find g double dash alpha, g double dash alpha मतलब क्या है, मुझे x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, अल्फा। तो अगर मैंने अल्फा सब्स्टिट्यूट करा, ये क्या हो गया, f डैश अल्फा, f डबल डैश अल्फा इंटू 1 बाय f डबल डैश अल्फा, oh sorry, f dash alpha square. So this f dash alpha 1 cancel out and this will be f double dash alpha f dash. What will be this term, second term? सेकेंड टर्म में हम सेकेंड टर्म में जो एफ डबल डैश एक्स का है उसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर सेम यू वी डब्ल्यू कर दो। ध्यान से देखो, f of this will be 0. Why? Third term will also be 0. Tell me the reason why it is 0. Yes, Aditi. Pratham. Why it is 0? मैम एफ अल्फा हो जाएगा ना। Yes, because when you will substitute alpha over here, this term will become my f of alpha, and at the root your f of alpha is 0. That's why this term 0 into anything, this will be your 0, and in the third term already you have f of alpha, that will be your 0. Now you have given that your f dash alpha is non-zero. Obviously it is depending on f double dash alpha. If we are taking that is non-zero, then which is equal to non-zero, therefore the order of convergence of Newton's method is at least quadratic. अगर आपका f g डबल डैश अल्फा भी 0 हो जाता है, ये कब 0 होगा, जब आपका डबल डेरिवेटिव 0 होगा। अगर आपका डबल डेरिवेटिव भी 0 हो जाता है इस केस में, तब आपकी क्या होगी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, तब आप ट्रिपल डेरिवेटिव चेक करोगे। अगर ट्रिपल डेरिवेटिव आपका नॉन जीरो होता है तो आपका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होएगा, क्यूबिक। इज दिस क्लियर, यस और नो? हमने ये प्रूव किया था ना वो फिक्स पॉइंट में कि मैंने g ऑफ अल्फा में क्या प्लस कर दिया था, मैंने एक टर्म प्लस कर दी थी p माइनस p मैंने कर दिया था, तब हमने x वो सीरीज खोली थी, दिस इज g अल्फा, ठीक है। और ये मैंने g ऑफ p, मैंने p अगर फिक्स पॉइंट लिया था किसी भी पॉइंट से स्टार्ट किया था, तो हमने किया था ना अल्फा माइनस p इंटू g डैश एट p, और फिर हमने सेकंड निकाली थी, तब मेरा gp क्या था, दिस पॉइंट, और ये हमने स्टार्ट किया था दैट बिकम g ऑफ p माइनस p। तो ये उस से भी आप कर सकते हो, वहां से आपने ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितना निकाला था, q। तो इस केस में आपका डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नॉन जीरो, एंड इफ इट इज f डबल डैश अल्फा, अगर आपका नॉन जीरो रहेगा तो आपका डबल डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा, तब आपकी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आपका क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक। अगर आपका f डबल डैश अल्फा 0 होता है तब आपका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आपका ज्यादा होगा, ठीक है। इज दिस क्लियर टू ऑल, yes or no? Yes, ma'am. Fine. So in this case, if you have g double dash, that is the remark, that if your g double dash x, you can say that is the remark, if g double dash x alpha is equal to 0, then we can expect higher order of convergence in case of Newton's method. Okay. तो नेक्स्ट एग्जांपल से हम चेक करते हैं, दैट्स व्हाई जब हमने प्रॉब्लम करी ना x रेज़ टू द पावर 100 इक्वल टू 0, यहाँ पे जो मेरी x इक्वल टू 0 थी, दैट वाज नॉट माय सिंपल रूट,
That's why your convergence was slow. We will modify that how your convergence can be fast. So that's why my convergence was slow and the convergence was not quadratic in that case. Because at that point you got your f of dash alpha is equal to 0. And your f dash alpha, if it is non-zero, then you have more order of convergence. Fine. So next example is that you have given f of x is equal to sine of x, and you have to use iterations of Newton's method, and you have to take x naught as initial approximation form, and you have to determine absolute error in each computed approximation. Now it is also asking what is the apparent order of convergence. So now we have function as f of x is equal to my sine x, and for applying your Newton's method, I need to find f dash x, that is your cos of x. So your iteration will become xn plus 1, xn minus derivative f of xn, f dash xn. This is, so your this will be xn minus sine xn. This will be your cos xn. So don't write it in tan xn. So why? Because when you have given, if you have given, you have to use only 4-digit राउंडिंग अर्थमेटिक. तो आप क्या करोगे, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, अर्थमेटिक राउंडिंग डिजिट अर्थमेटिक का क्या मतलब है कि एट एवरी आइटरेशन व्हेन यू हैव टू परफॉर्म your iterations, at every step you have to use 4 digits. So if you are calculating suppose sine 4, you have to take only 4 digits. Fine. Significant digits. If it is mentioned 4-digit rounding, that means it is saying 4-digit significant digit. And then when you will calculate cos 4, then again you will take 4 digits. Then when you will divide this again after division, that you have to take 4 digits. So if you will take tan 4, it can be possible that there will be some there might change, because you have to take the 4-digit rounding at every step, like we have done in the nested arithmetic, that if we want to calculate x square, x cube and anything. So when we want to calculate x square, that means x into x, then again the answer which I got, I have to use it their 3-digit or 4-digit rounding. Again for the x cube, 3-digit rounding, and then into your new value of x, again the answer comes out to be your 3 digits, then you have to round it off. So in this way you have to proceed. If it is mentioned that you have to use 4-digit rounding arithmetic or any decimal places, if it is not mentioned, then you can write tan xn, so that will not create a problem. But if it is mentioned in the problem, then you have to use particularly rounding method or particularly your significant digit method, that how many decimal places you can take, so that you have to consider it for every step. If it is not mentioned, then you can do. Fine. So if you will start with your this iteration, and we have given x naught as 4, I will calculate x1 will be my x naught minus sine x naught by your cos x naught. This is coming out to be your 2.8422. It has set to find absolute error. Absolute error in that case will be x1 minus x naught. So that is coming out to be 1.1578. For the second iteration, I will put x1 minus sine x1 by cos x1. So I will have 3.1509. The error at this step will be x2 minus x1. So this will be your 0.3087. x3, if you perform, this is coming out to be 3.1416. E3, and this coming out to be your x3 minus x2, and this is your
0.0093. So since if I have suppose one decimal, you can perform for more accuracy. Just I want to show that how your convergence is playing a role over here. So we have found that these are my absolute error. If we are saying if P, because we have to find the order of convergence, if we are saying if P is the order of convergence, then in that case it every step क्या होना चाहिए, जो मेरा error इसमें आया, that should be the error of equal to E2 by E1, यही होना चाहिए ना, यही हम करते हैं limit n tending to infinity Pn plus 1 by Pn your xn you can take because I am taking P as error, यही हम करते हैं ना। तो मैं आप यहाँ पे कह रही हूँ कि मेरा order of convergence क्या है P, तो E3 और E2 जो है उसी के proportional होना चाहिए। Now you know the value of E3 and you can take P will come out to be your log of E3 by E2 and log of E2 by E1. So if you substitute the value and you will calculate, it is coming out to be your 2.6498. That is approximately 3. So in this case, you have seen your order of convergence is order of convergence is 3. Is it clear? Yes or no? Yes. So this was all about your Newton's method when you have simple root. We will proceed with your multiple root in the next lecture. That what will happen if you have multiple roots, then why your convergence is simple. We will modify the formula of Newton's in the next class. So how we can modify, because we have seen that x is equal to 100 equal to 0, x is equal to 0 was your multiple root with multiplicity 100. It was 100 multiplicity. That's why I have convergence of Newton's was slow. So how we can improve if I have multiple roots? That means we have to we need to do some modification in your Newton's method so that it will have more order of convergence. Fine, that we will proceed in the next classes. So if you have any doubt till here, you can ask. Yes, is there any doubt? No, ma'am. One more thing I want to ask from you, how